हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ विद अकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे हैं, जो कि आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कवर करता है। इवन दो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और आपका पेपर अगर उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जा रहा है, या फिर आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यू कैन लर्न फ्रॉम हियर। दैट इज बेसिक कैलकुलस, डिफरेंशियबिलिटी कह सकते हो, डिफरेंशिएशन, जो रियल एनालिसिस का जो बेसिक पोर्शन होता है, दैट इज कवर इन दिस lecture series of the differential calculus. Okay, so let us start today's session. आज हम कुछ बेसिक फार्मूलाज की बात करेंगे, जो कि डेरिवेटिव्स को बताते हैं। कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस के डेरिवेटिव हम रिमेम्बर कर लेंगे। बाकी तो हमें पता है कि कैसे हम किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। So we have written here standard formula. Okay, so already we know that कि how the differential coefficient is defined, है ना। हमने देखा था कि अगर if I'm just taking function, let be this is y is equals to fx is a function. So its derivative, it means differential coefficient dy dx. Yeah, you can just write it f dash of x. Is defined as this is limit h tending to 0, and this is f of x plus h minus of fx and divided by h. ओके, ऐसे डिफाइंड होता था। इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दिस इज लाइक अ राइट हैंड डेरिवेटिव, है ना। और क्योंकि x पे हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज जनरल पॉइंट। इट मींस थ्रू आउट द डोमेन हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं उस फंक्शन की। ओके, so this is the general formula we will get for the derivative of a function at the point x. Okay, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। This is the limit h tending to 0 f of a minus h, not a, just using here x. Okay, control z. So this is your x minus h and minus of fx divided by minus of h. So this is your derivative. तो चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करो, चाहे आप इस फॉर्मूले का यूज करो, you will get a differential coefficient. We know that this is the differential coefficient. ओके, सो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। इट मींस वी यूज दिस फार्मूला dy dx फॉर अ फंक्शन इज लिमिट h टेंडिंग टू 0। तो अब हम करेंगे क्या, कि हम कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस का हम डेरिवेटिव डायरेक्टली देख लेंगे कि उसका डिफरेंस डेरिवेटिव आएगा। पहले कांस्टेंट फंक्शन को ले लेते हैं। लेट अस कांस्टेंट फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन c with respect to x, या with respect to whatever the variable we are doing with respect to x is just equal to 0. Its derivative is 0 where this c, where c is constant. आइए हम एक आधा फॉर्मूले देख लेते हैं कि हमारे पास कैसे कांस्टेंट जीरो होता है। तो ये द फंक्शन एफ एक्स इज योर कांस्टेंट फंक्शन सी। तो डेफिनेटली एक्स प्लस एच अगर आप रख लेंगे, तो एक्स है ही नहीं, तो ये हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन ही बना रहेगा। इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस डेरिवेटिव, तो यू नो दैट दिस इज लिमिट्स, डेरिवेटिव मींस dy dx. This is y equals to some constant. The limit, this is h tending to 0, f of x plus h minus fx is divided by tending to 0. Clearly, we have this is x plus f of x plus h is just equal to c. C minus c, function की value is c upon h. And from here, you will get 0. This is limit h tending to 0, and we will get 0. And simply can say 0. So it means derivative of a constant function is always will be equal to 0. तो whenever we see कि हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है एंड उसका अगर हम डेरिवेटिव लिख रहे हैं, दैट विल बी 0। ये सब आप अपने जो स्कूल कैडेट की मैथमेटिक्स है इन द 12th स्टैंडर्ड, यू हैव डन दीज ऑल। ओके, तो वी कैन रिकॉल द थिंग्स। हम सारी चीजें को रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जब हम फर्दर अपनी जो एडवांस लेवल का मैथमेटिक्स जब पढ़े, तो हमें डिफिकल्टी ना हो। ओके, तो लेट्स रिवाइज द थिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि इफ देयर इज अ फंक्शन in the polynomial type d of dx, and this is your x की power n. This is derivative of this is just equal to n x की power n minus 1, and where n being a number.
ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली जैसे हमने ऊपर कैलकुलेट करा है इसका डेरिवेटिव इस फंक्शन का, यू कैन आल्सो कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। तो लेट अस सी कि हाउ वी विल कैलकुलेट। तो हम यहाँ पर लेट वी हैव जस्ट टेकन दिस इज y, दिस इज fx इज जस्ट इक्वल टू x की पावर n। x की पावर n है और उसका जनरल डेरिवेटिव आपको चाहिए d dx चाहिए ऑफ x की पावर n, दैट इज डिफाइंड n x की पावर n minus 1 and n being constant. So this is y equals to fx for n. If I'm just calculating f of x plus h, in the place of x, we will n हो जाएगा. Let us see the derivative of this function f dash of x is just equal to, yeah, you can just say dy dx, or you can just say d of dx of x to the power n. This is all things are same. So this is the limit. We can use the limit h tending to 0, and we know that we use like the formula x plus h minus of fx divided by h tending to 0, or f of x plus h means x plus h power n minus of x to the power n and divided by that is your h. Okay, so we know the binomial expansion of a function. Okay, binomial expansion, we know that a plus b to the power n is what? This is your a to the power n plus nc1, nc1 a to the power n minus 1 into x b. So this is b. Okay, r, and this is a to the power n minus r and b to the power r. And similarly, the last term we have b to the power n. Okay, so we have this is binomial expansion, a plus b to the power n is open like this. So similarly, here this is x plus h to the power n is here. We can using the binomial expansion. So we will see this is the limit h tending to 0. यहाँ पर हम x की पावर n प्लस का nc1 x की पावर n minus 1 into h. Okay, and this is plus nc2 x की पावर n minus 2 and h square, and so on up to in the last we will have this is h की power n minus x की power n. Okay, and divided by h. Okay, so from here we will just cancel out it. ठीक है, आप कैंसिल कर लिए. वी विल टेक h आउटसाइड, तो लिमिट वी हैव nc1 x की पावर n minus 1 plus nc2 x की पावर n minus 2. In the last we have h की पावर n minus and divided by h. तो clearly we can see कि हमारे पास जो h, ये h है और ये h कैंसिल हो जाएगा, and now because it is any positive number and that is tending to 0. So here we have, अगर मतलब ये पहला वाला टर्म छोड़ के और सारे टर्म्स में h मौजूद है, तो if we will apply this limit h tending to 0, तो all these terms will be equal tending to 0, it will be all 0, 1 x की power n minus 1, and we know the value of nc1 is just equal to r is what, है ना, this is factorial n upon factorial n minus r and factorial r. So if you are just going to calculate n minus 1 and factorial 1, so value of a factorial 1 is 1. We know that this is and the factorial will be open n factorial n minus 1. So this will be factorial n minus 1 into 1. This is cancel, we will get n. तो यहाँ पर हमारे पास तो nc1 है, उसकी वैल्यू होती है n, तो this is n x की power n. It means that the derivative of this function d dx of x की power n is just equal to n x की power n minus. ठीक है, n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है एनी पावर ऑफ n इट्स ओपन, है ना, एनी रियल नंबर यू कैन जस्ट यूज इट. So this is your formula for the derivative of x की power n. Okay, so x for n is open and x for n minus 1. So how it becomes the formula? Comes in knowing the formula by this definition of the derivative of the function. Differential coefficient की definition से, है ना, fx plus h minus fx upon h when limit x tending to 0. Okay, so similarly we can also find other formulas. So let us write the formula. Not I am going to discuss the derivation of all these formulas, but this is the process how to find the formulas and how to define how we calculate the differential coefficient of a function. Okay, so let us move for the next formula. So next formula is your exponential function. So this is your exponential function. So this is d dx of e to the power x.
is just equal to e to power x. It remains the e for x. And if there's a function like this dx of a to the power x, a is any constant, it will be a to the power x to the base e log a. And this is the derivative of this a to the power x function. Okay. Next formula, I'm going to discuss next formula. So next formula is your d dx of log x. And that is equals to 1 upon x. Okay, so this is the formula for the log x, the derivative is 1 by x. Next, we have this is derivative of the sin x. Derivative of the sin x is just equal to cos. Okay, and sixth one, the derivative of the cos x is minus of sin. And derivative of the tan x is just equal to sec square. Okay, and then you can just find in the A, this is derivative of the cot x is just equal to minus of cos x. So this is formula for only for recall the things, just learn once. एक बार आप इन चीजों को पढ़ लीजिए. Ninth is your derivative of the sec x, d dx of sec x just equal to sec x into tan x. If you want to derivative of the cosec x, this is d dx of cosec x. It's just equal to minus cosec x into cot x. Okay, so this is the formulas. So this is cosec x and cot x. Other formulas let us write here. So we have if there is a function. अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट है, सपोज दैट वी हैव कांस्टेंट मल्टीप्लाइड टू द एफएक्स. ओके, सो दिस कांस्टेंट इज को हम बाहर ले सकते हैं. इट विल बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ fx. So if there is a written here derivative, so clearly you can just see this is 5, derivative of this is e to the power x, and that is equal to 5 into. Okay, so similarly if there is the sum of the two functions, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डेरिवेशन. दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस इज f1x प्लस का f2 कैन जस्ट से माइनस प्लस इज जस्ट इक्वल टू d of dx of f1x, and this is plus minus d of dx of. If derivative of you want to find the f2x is another function, and this is forming the product, you just and plus this is second function derivative of the first function. Okay, and quotient formula we can also say कि अगर like this f1x upon f2x. So this is your f2x d dx of f1x minus f1x, and this is d dx of f2. Okay, so this is the denominator f2x, f1x minus f1x, and derivative of the second function is the denominator का whole square. Okay, so let us write the formula for the inverse trigonometric functions. So this is d dx of sin inverse x is just equal to 1 upon root of 1 minus x square. अगर हम यहीं पर डेरिवेटिव ऑफ द cos इनवर्स x निकालते हैं, d dx of cos इनवर्स x, तो it okay. Similarly 16, if the derivative of the tan inverse x, this is the tan inverse of x, is just equal to 1 upon 1 plus x square. Okay, एंड अगर हम यहीं पर cot इनवर्स का निकालते हैं, दिस इज डेरिवेटिव ऑफ cot इनवर्स ऑफ x प्लस x. क्लियर? नेक्स्ट 17th result, that is derivative of the sec inverse. So d dx of this is your sec inverse of x is just equal to 1 upon x root of x square minus 1, and अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं cosec inverse, this is your cosec on x root x square minus. Okay, so this is the your derivatives of the some special function. Okay, let us define some functions like hyperbolic function, है ना. तो इनके बारे में उसके फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की हम बात करेंगे, है ना. तो ये जो बेसिक थे ये तो हम पढ़े हैं 12th लेवल पे, हम स्टैंड अपना पहले से पढ़ के आए हैं और हमने रिकॉल कर लिया चीजों को. अब कुछ स्पेशल टाइप के और फंक्शंस हम इन्वॉल्व करते हैं
और उनके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट टू लर्न द सम न्यू फंक्शंस। सो हाइपरबोलिक फंक्शन, सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शंस। So we have six hyperbolic functions and these are defined as. So from the trigonometry we have the six hyperbolic functions. So these are defined like this. First is sine hyperbolic. Sine hyperbolic x. And it is defined like this: e to the power x minus e to the power minus of x and divided by e. Okay. So this is your sine hyperbolic x. This is ruled as sine hyperbolic x. Okay. Next is cos hyperbolic x. And this is defined like this: is e to the power x plus e to the power minus of x divided by 2. And similarly, we know that as a trigonometry functions, this is tan hyperbolic x is just equal to sine hyperbolic x divided by cos hyperbolic. So from here you can just see this will be e to the power x minus e to the power minus x is divided by e to the power x plus e to the power minus. Okay. Next, we can just see कि हमारे पास similarly if we are talking about the cot hyperbolic x, so it will be equal to cos hyperbolic x divided by sin hyperbolic. Clear? And from here, you know that it's cos, so it will be reciprocal of the tan hyperbolic x. So it will be cos divided by e to the power x minus e to the power minus. Okay. And next, we can talk about cosec hyperbolic x. It will be equals to 1 upon sine hyperbolic x. And you can just say this is 2 upon e to the power x minus e to the power minus. है ना? And similarly, sec hyperbolic x is just equal to 1 upon cos of x. And you can just say this is 2 upon e to the power x plus e to the power minus. So these are six hyperbolic functions. These are defined like this. So we have some identities. Okay. So these functions satisfy these following relations as well. तो अब देख लेते हैं कि कौन से रिलेशंस सेटिस्फाई करते हैं. तो वी कैन आल्सो से कि these functions have these functions satisfy the following relation. Okay. So first we know one first relation is your cos hyperbolic square of x minus sine hyperbolic square of x is just equal to 1. Okay. Second, that is equals to cos hyperbolic square plus sine hyperbolic square x is just equal to cos hyperbolic 2x. Okay. Number third formula is just 1 minus tan hyperbolic square x. ये तो फर्स्ट से फार्मूले से बन जाता है हमारे पास. It will be sec square hyperbolic of x. Okay. And similarly, from the first one, we have this identity as well. This is cot hyperbolic square minus the 1 is just equal to cosec hyperbolic square of x. So we have these four relations between this cos, sin, and tan, sin, sec, cot, sec, and so cot hyperbolic है ना. तो this अगर आप ये फार्मूला आप रिमेम्बर रखेंगे तो यू कैन एबल टू से. और यहाँ पर हमारे पास दो फार्मूले दिस इज इम्पोर्टेंट है ना. दिस इज cos hyperbolic square x plus sin hyperbolic square x is just equal sorry minus is just equal to 1 and it will take plus it will be equal to cos hyperbolic 2x. Okay. So remember these formulas. So let's define its derivative. What will be the derivative of these functions? Now the differential coefficients the differential coefficients
differential coefficients of this six hyperbolic functions. तो थोड़ा सा हम इसको जो ब्रीफ है उसे थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं. पॉइंट से ओके. सो द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द सिक्स हाइपरबोलिक फंक्शन. तो सबसे पहले हम साइन का लिखने वाले. लेट अस राइट द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ द साइन हाइपरबोलिक. तो this is derivative of this sine hyperbolic x is just equal to, and you know that कि हमारे पास जो sin hyperbolic x है कैसे डिफाइंड है, e to power x minus e to power minus of x divided by 2. So from here if we take 1 by 2 outside, we have derivative of this is e to power x minus this is derivative of e to power minus of x, है ना. And we know that this is derivative and e की power x derivative e power x ही रहता है, and ये minus e power minus x and minus x का minus 1 आ जाएगा, तो it will be plus of e to power minus of x. And it will be again it will be equal to cos value of this sine hyperbolic x is just equal to cos hyperbolic. Clear? And if we talk about the derivative of the cos hyperbolic x, let us write the formula. So this is the derivative of this is a cos hyperbolic x, and you know the formula for the cos hyperbolic x is just equal to e to power x plus e to power minus x and divided by 2. You just take 1 by 2 outside, and this is your d dx of e to power x and plus this is d dx of e to power minus x. And from here you will have power x, and यहाँ पर minus है तो ये हो जाएगा minus e to power minus x, and it will be your sin hyperbolic. ध्यान दीजिएगा, हम जब टेक्नोमेट्रिक फंक्शंस में करते थे तो वहां पर जब हम कॉस का करते थे तो माइनस का साइन आता था, बट यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स आएगा, ना कि माइनस में आएगा. ओके. तो अभी कर जस्ट रिमेंबर दिस फार्मूला कि डेरिवेटिव ऑफ दिस कॉस हाइपरबोलिक एक्स इज जस्ट इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स. क्लियर. तो डेरिवेटिव अगर साइन हाइपरबोलिक का करते हैं तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स आता है, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स का करते हैं तो sin hyperbolic आता है. Similarly, for the other formula, we have the derivative of the tan hyperbolic x. And if you want to tan hyperbolic x, you know that derivative of sin hyperbolic x divided by cos hyperbolic x. ये तो फार्मूला होता था हमारे पास tan hyperbolic x का. अब इसमें हम फार्मूला लगा सकते हैं. We will apply the formula. This is your cos hyperbolic x, जो क्वेश्चन फार्मूला था उसे अप्लाई. cos hyperbolic x derivative of sin hyperbolic x and minus this is your sin hyperbolic x and this is derivative of cos hyperbolic x. Okay. Divided by cos hyperbolic x, the hyperbolic x का whole of square, and from here you will just see sin का तो cos हो जाएगा, तो it will be cos hyperbolic square of x minus here this is sin hyperbolic square of x because cos का sin hyperbolic हो जाएगा, and divided by this is your cos hyperbolic square of x. So this is, you know that is cos hyperbolic square of x minus sin hyperbolic square of x is just equal to 1, so it will be equal to 1 upon this is your cos hyperbolic square of x, and it will be equals to a sec hyperbolic square of x. It means that derivative of this hyperbolic, this is d dx of tan hyperbolic of x is just equal to this is your sec hyperbolic square of x. Okay, so this is your third one, and similarly this is your d dx. If you want to go for the cot hyperbolic x, it will be equal to similarly d dx of this is cot hyperbolic x divided by not cos, sorry, cos, and this is your sin hyperbolic x. Okay, we again apply this formula, we will get sin square hyperbolic x minus this is your cos hyperbolic square x divided by this is your sin square of x. So we know that minus 1, and this is your sin hyperbolic square of x, and from here you will get minus cosec hyperbolic of x square. Okay, so this is the negative terms of the cosec hyperbolic square of x. So it means the derivative of this cot hyperbolic of x is just equal to minus times of cosec hyperbolic square of x. Okay, next we can just see
derivative of this sec hyperbolic of x. So it will be equal to derivative of dx, and that is equal to 1 upon cos hyperbolic of x, and that will be equal to cos, फिर अगर ऊपर जाते हैं तो निगेटिव में आएगा, तो it will be equal to minus sin hyperbolic of x divided by cos hyperbolic of x. Okay, so from here you will get this is minus of sec hyperbolic of x into tan hyperbolic of x. Okay, so it will be minus of sec hyperbolic x into tan hyperbolic x. Okay, this will be the formula for this. So this is d dx of sec hyperbolic of x is just equal to minus, this is your sec hyperbolic of x into tan hyperbolic of x. Okay, this is your cos sec hyperbolic of x is just equal to, this is d dx of 1 upon sine hyperbolic of x, and that is equals to minus, this is cos hyperbolic of x divided by, this is sine hyperbolic square. Okay, and similarly we will have, this is cos upon sine, it will be cot, then will be minus cot hyperbolic of sec hyperbolic of. Okay, so this is the derivative of the cos sec hyperbolic. These are looks like similar to the trigonometric function, but some of the functions we have the negative, positive difference, and the identity is different. So you can learn these formulas carefully. Do not uh, uh, involve with the trigonometric functions, because if we just learn with the trigonometric function, you will be confused sometimes. Cos x. Okay, so this will be the derivative of the cos sec hyperbolic x is equals to minus cot hyperbolic x into cos sec hyperbolic x. And derivative of the sec hyperbolic x is equals to minus sec hyperbolic x into tan hyperbolic x. Okay, so these are the formulas for the derivatives of that hyperbolic function. Okay, तो आइए कुछ इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं, है ना, और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ लेते हैं, उनके डेरिवेटिव्स को देख लेते हैं. So next we talk about the inverse hyperbolic function. So the differential coefficient of inverse hyperbolic function. So if you are going to find the derivative of this sine hyperbolic inverse of x. Okay, so it will be equal to 1 upon root of 1 plus x square. ठीक, जब साइन इनवर्स x होता था तो वहां पर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था. एंड इफ वी जस्ट गो फॉर derivatives of cos hyperbolic inverse of x is just equal to 1 by root of x square minus of 1. Okay, so just learn this formula. Clearly, if just we have sine hyperbolic inverse of x is just equal to y. So this implies clearly this is x is equal to sine hyperbolic of y. So from here we will calculate this formula. So अगर हम यहाँ से हम डेरिवेटिव की बात करते हैं, अगर हम इसके डिफरेंशिएट करते हैं, इसको सपोज हमने इसको डिफरेंशिएट करा, तो वी विल हैव dx of dy just equal to साइन का y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos hyperbolic of y. Okay, and from here you can just say this cos is just equal to root of 1 plus sin hyperbolic square of y, है ना, ये हो जाएगा. एंड इसकी जब x माना है तो it will be equal to 1 plus x. So this implies if we can say dy of 1 plus x. Okay, so we will get this formula. So this implies simply with the derivative of sin hyperbolic inverse of x is just equal to 1 upon root of 1 plus x. Okay, similarly अगर हमें हमने we can just say
let us see. Let here this is cos hyperbolic inverse of x is just equal to y. So from here we can just say x is equals to cos hyperbolic of y. अब यहाँ पर अभी हम same with respect to y. So we have this is just sin hyperbolic of. Okay, and we know that this is cos hyperbolic square of y minus the sine hyperbolic square of y is just equal to 1. So from here, if you want to calculate sine hyperbolic square of y, you will have this is cos hyperbolic square of y minus 1. And इसकी जगह हमने कहा है this is your x, so this will be x square minus 1. And from here, if this is you want to calculate sine hyperbolic y, from here you will get this is x square minus 1, square minus 1. So from here, if you are calculate dy dx, it will be equal to 1 upon root of x square minus 1. So this implies the derivative of the cos hyperbolic inverse of x is just equal to 1 upon root of x square minus. Okay. So these are two formulas for the derivative of the sine inverse sine hyperbolic inverse of x is just equal to 1 upon root of 1 plus x square. And the derivative of the cos hyperbolic inverse of x is equal to 1 upon root of x square minus 1. Clear? So if we just go for the tan inverse, we can also learn the things. So, and we have this formula, and the derivative of tan hyperbolic inverse of x is just equal to 1 upon 1 minus x square. Similarly, we can also calculate this and all other trigonometric hyperbolic functions. Okay. So this is the derivatives of the hyperbolic functions and their inverse hyperbolic function. Okay. Now let us say some parametric functions. Suppose that key x and y, and x is the function of y, y is the function of x, and x and y is separately given in the function of some one variable that is called parameter, है ना? तो उसके रिस्पेक्ट अगर पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई है तो उस केस में हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे लिखते हैं? लेट अस डिस्कस अबाउट इट. So let us discuss about it. So differential coefficient, difference is one of the parametric equation. Differentiation of the parametric equation. Differentiation of the parametric equation. So if x and y are the functions of a one parameter t, suppose that as a parameter t, तो उस केस में हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy dx कैसे लिखेंगे? तो आई एम गोइंग टू डिस्कस. तो व्हेन you can just write here when x and y are both expressed in terms of a third variable I'm just saying कि ये variable हमने कहा say it is t. Okay, so we find dy dx as if we have like this, if this is x is the function of t separately, x is the function of t, and y is also with another function of t, and both are depending on t. Okay, so then we have here dx of dt. We can just differentiate with respect to t. It means f1 dash of t. And you also differentiate this y with respect to t. So you can just have f2 dash of t. Okay. So if you want to calculate this is dy dx, we have to calculate dy dx. So it will be equal to dy of dt into dt of dx. And you can write this dy dx like this, dy dt into dt
dx. If you can just see, अगर हम dt cancel कर रहे हैं तो this is dy dx the remaining, and you can also put like this. This is your dy of dt divided by this is your dx of t. तो वे एक दूसरे को डिवाइड करके आएगा. इट मीन दैट दिस इज योर f2 डैश ऑफ t divided by f1 dash of t, है ना. You can just say like this. Okay, so clearly कि अगर हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म है where t is any parameter, you can just say like that. So this is the parameter. So if the x is given in the function of parameter t and y also is the function of the parameter t, then you want to calculate the differential coefficient dy dx. Then you can just simply derivative y with respect to t and derivative x with respect to t and divide both, है ना. dy dt by dy dx dt. Okay, so this formula is defined here. This is equals to dy dt and this is dx dt. ये आपको याद है. If let us find an example. Let us discuss about example. So when I'm just taking here, when x is equals to a t 2 square, a t square, and y is equals to 2a t. A is some constant. Okay, so they ask about the phi. They asking about dy dx. So here we clearly say कि अगर हम इसको x को with respect to t differentiate करते हैं, तो दिस इज t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो इट विल बी 2at. एंड इफ y को विद रिस्पेक्ट टू हम t डिफरेंशिएट करते हैं तो t इज पावर 1, इट विल बी 1. दिस इज 2a विल बी रिमेनिंग. Okay, so if you want to calculate this is dy dx, so we know it will be equal to dy dt divided by dx of a divided by 2a into t, and that will be equals to 2a which cancelled, it will be 1 by t. So this is the differential coefficient dy dx is 1 by t. Okay, so this is the how we calculate the differential coefficient of a parametric class. Okay, next we can just see next about the तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिफरेंशिएशन देख लेते हैं. logarithmic differentiation. So, so when this function, when a function, you can just say this is function capital Fx is given like this. अगर इस तरीके का फंक्शन है, सपोज दैट कि वो हमारे पास कैपिटल Fx कुछ इस तरीके से, दिस इज इक्वल्स टू दिस इज Fx और इसकी पावर में कोई अनदर फंक्शन है, सपोज दैट दिस इज F2x. कभी ऐसा अगर हमको फंक्शन मिल जाए तो वी विल यूज द टेक्निक ऑफ लॉगरिथम. अब लॉग को लेकर अब इस तरीके के फंक्शन को आसानी से, जैसे कि अगर आपसे इस तरीके का आपसे पूछा जाए कि दैट y एंड दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ x की पावर कॉस ऑफ x, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है. अब इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव चाहिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो आप लॉग का सहारा लेंगे, देन यूज द लॉगरिथम टेक्निक टू डिफरेंशिएट सच टाइप ऑफ फंक्शंस. ओके, so this is the function f1x, this is one function, and in the exponent there another function f2x. Okay, so this type का अगर function है तो you can how we use this to taking the logarithm. So you can say where this is f1x, where this is f1x and this is f2x are the functions, are both different from a constant, these are not constant functions, because if they are the constant, if f2 is a constant, so different directly we can apply the formula x power n such type. Okay, so these f1 and f2 are both different from a constant, it's not a constant function. So let's we find the derivative. We find the derivative of capital Fx, okay, with help of logarithm. With the help of, so taking logarithm both sides. So we have this function here. What we have to find? This is a derivative of capital Fx. So this is capital Fx just equal to
f1x into इसकी पावर f2 of x, ठीक है। सो टेकिंग लॉगरिथम ऑन द बोथ साइड। तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज लॉग ऑफ एफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू log f1x or f2x. So we can use the formula, the log we will have, this is f2x is outside and this is log of f1x. This remains like, okay, since log of m to the power n is equals to n log m. Okay, so we use this formula and now this is the function of the two product of the two functions. एक function ये हो गया हमारे पास और एक function ये हो गया, okay, और इधर हमारे पास log है। तो हम now differentiate, now differentiating with respect to x. So it will have, this is log fx का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 upon fx into this is d dx of fx। ये तो होगा चेन रूल है ना, पहले तो हमने लॉग का लगाया, फिर दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ fx। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल लगेगा, तो इट विल बी f2 of x, डेरिवेटिव ऑफ दिस इज log of f1 of x and this is plus this is log of f1 of x into derivative of the f2x, okay। So first function derivative of the second function and second function derivative of the first function, this is the product rule। so this is your f2x and we know that the log का हमारे पास क्या हो जाएगा 1 upon f1x h of m, you can just write like this, this is log of f1x into derivative of the second function, first function, this is f dash। so you will have like this, okay। so from here you will get this one, so this implies this is the f ddx of fx, it means that we are writing this is f dash derivative of the function fx, और जो कैपिटल fx था उसी का हमें डेरिवेटिव कैलकुलेट करना था, तो ये fx उधर चला जाएगा, तो दिस इज fx into bracket में you can just say this is your f2 of x, this is f1 dash of x divided by f1x and this is plus this is your log of f1x into f2 dash, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं एंड यू नो दैट व्हाट वाज द fx इज एक्चुअली if f1x into f2x का होल पावर, तो एज एक्सपोनेंट, तो दिस इज इम्प्लाइज दिस x जो भी फंक्शन था कैपिटल fx उसकी जगह पर हम पुट कर देंगे दिस इज f2 of x and that is equals to the log पहले लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज f1 of x into fx into f1 dash of x upon f1, क्लियर। सो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सच टाइप ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव हम लॉगरिथमिक लेकर करते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शंस का जो एक्सपोनेंट है दैट इज अ फंक्शन एंड नन ऑफ देम इज अ कांस्टेंट फंक्शन, उनमें से कोई कांस्टेंट, क्योंकि अगर कांस्टेंट फंक्शन है सपोज दैट वी हैव लाइक दिस c एंड सम कांस्टेंट फॉर एक fx दिया हुआ है, तो इसके लिए हमारे पास दिस इज द एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन, अब उसका रूल लग जाएगा, और कोई अगर फंक्शन है उसका कोई कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है तो वो x फॉर n वाला टाइप का फंक्शन बन गया, फिर उसकी तरीके से हम उसको चेन रूल से डिफरेंशिएट कर देंगे, ओके। तो लेट अस सी एक डेरिवेटिव कर लेते हैं, सो एक एग्जांपल कर लेते हैं इस मेथड से, इस टेक्नोलॉजी से। तो वी आर टेकिंग एग्जांपल हियर, so they are asking you differentiate sin x to power log of x, ओके, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू, okay, so let us write the solution of it। so I'm just taking let this is y is just equal to sin of x की पावर x। अब देखिए यहाँ पर log x एक फंक्शन है और sin x एक फंक्शन है, they are different from the constant function, तो we clearly see कि इस तरीके को हमें लॉगरिथमिक से सॉल्व करना है, तो हम just taking log, तो जब log ले लेंगे तो we have this is log of y एंड ये हमारे पास log x बाहर आ जाएगा, दिस इज log x into log of sin of x, ओके। नाउ डिफरेंशिएट कर दीजिए, x के रिस्पेक्ट में इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो जब हमने इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो log y का 1 upon y क्लियरली,
and this y का further dy dx. ओके, एंड log, तो log x का जो log x sin x है, तो log का पहले हो जाएगा 1/sin x, फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos of x, है ना। अभी जो फार्मूला हमने पढ़ा था उस फार्मूले की मेथड से हम कर सकते हैं, तो साइन डेरिवेटिव हो जाता है वो 1/x। Okay, and from here you have, this is the log of x into, you can also say it is cot x, and this is a log of sin x upon x. Okay, so and you can just see ये हमारे पास जो dy dx है, it will be equal to y and bracket में cot of x into log of x, and plus this is 1/x, this is log of sin. ओके, अगर हम यहाँ पर y की जगह पर ये फंक्शन फिर से लिख देते हैं, दिस इज sin x फॉर log of x, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ sin x का होल पावर log of x is just equal to sin की पावर x की पावर log of x, एंड ब्रैकेट में हमारे पास cot of x into log x, and plus this is 1/x, and this is log of sin. ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमें पास अगर फंक्शंस का एक्सपोनेंट के फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, तो वी कैन कैलकुलेट सच टाइप ऑफ फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट। ओके, अब हम बात करते हैं कंपोजिट फंक्शंस का। अगर एक फंक्शन है, फंक्शन कंपोजिट फंक्शन वी नो दैट वी कंबाइन टू फंक्शंस, है ना। अगर डोमेन्स और कोडोमेन सेम है तो उसके आधार पर वी नो दैट कि हमारे पास if they are the function f from a state x to y, or they are the function from y to z. So if it is a function from f from x to y, and then another function from y to z, that is your g. So we अगर x मैप कर रहा है इसको y पे, and y मैप कर रहा है इसको z, तो now we are going to find if this is function is from here to here, a function, ठीक है, which map this x to this y, है ना। तो जिसको हम बोलते हैं दिस इज g ऑफ f, है ना, एंड दिस इज डिफाइनिंग फ्रॉम x टू z, है ना। तो दीज आर फंक्शन फ्रॉम, तो दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो अगर मान लो दो फंक्शन का कोई कंपोजिशन दिया हुआ, जैसे कि सपोज दैट वी आर द फंक्शन साइन, और साइन के अंदर हमारे पास e फॉर x पड़ा हुआ है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन, वन इज द साइन एंड अदर इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके के अगर फंक्शन है तो उनके हम डेरिवेटिव्स कैसे लिखते हैं, और इसी को हम लिखने का जो मेथडोलॉजी होता है इसको हम चूज चेन रूल बोलते हैं। और हम पहले पहले हम फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं, उसके बाद सेकंड, उसके बाद हम उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हमारे पास कंपोजिशन में होते हैं हम सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव लिखते हैं वहां पर। तो लेट अस सी कि कैसे हम इस टाइप के फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को लिखते हैं। तो पहले तो चेक करते हैं कि कंपोजिशन ऑफ द टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अगेन डिफरेंशिएबल, वी कैन आल्सो चेक इट। तो let us write here chain. The differentiation of a composite function, chain rule. So if I'm just taking, let f and g are the two functions, let f and g be functions such that the range of f, such that the range of f contained in the domain of, contained in the domain of g.
Okay, and both are differentiable. Yeah. Then and this f is differentiable, is derivable or differentiable at a point C, is point taken C point, and this is G is derivable at FC. Okay, then the composition of two functions G of f is derivable and defined as, and derivative of this function f dash of at the point C is just equal to derivative of this function at the point T and derivative of this f with the points. Product of this both the derivatives. Okay. So जो composition of two functions how they are defined. If I am just saying कि हमारे पास f है, this is from x to y, okay, and this is g is from I'm just saying from a to b, okay, and both are differentiable functions. And obviously बात है कि and clearly this what way they are saying that कि हमारे पास if f and g be the functions such that the range of f, the range of f is contained in the domain of g, वो g के डोमेन में कंटेन करनी चाहिए. ओके, सो इफ आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज फ्रॉम this is your actually x, okay, and this is actually y, and suppose that b is also included here. Okay, this is your b, and if we have this is mapping from here to here, this is the f. Okay, so we have any point c where it is differentiable. So what is they saying, this is a कंटेन द रेंज. अगर हमने कहा कि ये हमारे पास इसकी रेंज है, तो वो इसके अंदर होनी चाहिए. सपोज दैट ये है, दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज योर एफ एक्स. तो नॉट बी, आई एम जस्ट नॉट टेकिंग दिस इज बी, दिस इज योर एक्चुअली ए. तो ए को ले रहे हैं, दिस इज योर ए, दिस इज ए. In this a, it may be some different points, and this y is also maybe some different point. But when you applied f on x, we have this range fx, f capital X. This is defined range, and this whole range is contained in a. And this is this g is a function from here to here on a any other set, like this is your b. This is your. Okay, now we are going to find. तो here now हम x से b के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जिसको हम g of f करते हैं. वो तभी पॉसिबल होता है. सो अगर ये c पे है और यहाँ पर अभी अभी सी बात है, c के लिए यहाँ पर एक पॉइंट होगा fc. तो जो f है वो c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, और जो g है दैट इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट fc. तो अगर हम इसका कंपोजिशन फंक्शन g ऑफ f डिफाइन करते हैं, दैट विल बी समवेयर फ्रॉम x टू b. मान लो हमने कहा दिस इज फ्रॉम x टू b, तो उस केस में हमारे पास जो ये हमारे पास आएगा ये भी डिफरेंशिएबल होगा एट द पॉइंट c, है ना. और डेरिवेटिव इज डिफाइंड लाइक दिस. ओके, सो लेट अस सी कि कैसे हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं. लेट अस सी कि हम कैसे इसका प्रूफ लिखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो आइए जरा इसका प्रूफ लिखते हैं. Proof of this theorem. तो समझ गए. If the two functions are differentiable, then their composition will also be differentiable. Composition is possible. Okay. So let us write the proof. कि हमारे पास जो कंपोजिशन फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है एट द पॉइंट सी इज डिफाइंड लाइक दिस, g डैश ऑफ f ऑफ c पॉइंट पे एंड f डैश ऑफ. ओके, so I'm just asking about. Okay, so given that the range, obviously बात है, given that
of f is contained in the domain of G. For the composition of two functions, it's necessary. So, therefore, we can just say same domain Z of. So let's define a function. So let's define a function by setting define a function f, capital F by f. कुछ इस तरीके से फंक्शन डिफाइन है, दैट इज कैपिटल एफ फंक्शन एंड दैट इज योर लिमिट h tending to 0 and this is your g f of c plus h minus का g थोड़ा सा समझने की बात है। इसको यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, जो पुटिंग है दिस इज योर g and f of c plus h, ओके ये हो गया एंड माइनस का g of f c, ओके एंड डिवाइडेड बाई f of c plus h minus the f of c. Okay, so here we can just see this is nothing, this is the derivative of dash at the points c point पे इसकी डेरिवेटिव है ना। हमने कुछ इस तरीके से इसको डिफाइन किया, इज if this thing will be tending to 0, it means f of c plus h minus fc will be tending to 0. तो हम अगर इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 तो आइए इसका यूज करेंगे। तो हमने अब एक फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइन करा है कुछ इस तरीके से, ओके। अब हम गॉस फंक्शन का यूज करते हैं। तो नाउ कंपोजिशन पे नाउ इन टर्म्स ऑफ द फंक्शन एफ we have like this g o f a dot of the c at the point c is nothing, this is your limit h tending to 0, you know that this is g of f of x c plus h है ना, ऐसे लिखा जाता है c plus h minus g of f and this is your c divided by h, ऐसे तो लिखा जाता है। तो 1 we can see यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं, लेट अस राइट लिमिट h टेंडिंग टू 0। इसको तो हम क्लियरली कह सकते हैं दिस इज g ऑफ f ऑफ c प्लस h, ये तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं माइनस g ऑफ f c एंड डिवाइडेड बाय h, ठीक है। सो अब आपको करना क्या है कि आप f ऑफ c प्लस h माइनस f c से आप मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको इसको इसके साथ अरेंज कर देते हैं और इस h को इसके साथ अरेंज कर देते हैं। तो यू कैन जस्ट से लाइक दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0, दिस इज g ऑफ f ऑफ c प्लस h माइनस दिस इज g ऑफ f c डिवाइडेड बाय दिस इज f ऑफ c प्लस h माइनस का f c इनटू दिस इज f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ f c डिवाइडेड बाय h, ओके। अब अगर हम दोनों को लिमिट के फॉर्म में लिख देते हैं तो वी कैन क्लियरली सी इट इज इक्वल्स टू लिमिट, तो दिस इज g ऑफ ब्रैकेट f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ g ऑफ f c डिवाइडेड बाय दिस इज योर f ऑफ c प्लस h माइनस ऑफ f c,
and this is your limit h tending to 0. This is your c divided by h, and this is nothing, ये तो हमने अभी पता ही है कि this is the derivative of this function g, है ना, तो इसको हमने देखा था, this is your g dash at the point c. Okay, and this is the derivative of the f function at the point c. So this is your f dash of c. So we can able to find. Okay, so this implies g of f derivative at the point c is just equal to g dash of derivative at the point fc into f dash. This is your answer. This is your proof. ठीक है, तो clearly the composition of two differentiable function at a point is differentiable and the derivative is defined like this. So this is also called chain rule. ठीक है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन अगर हमारे पास कंपोजिट है तो we can also say this is chain rule. तो हमने क्या किया, पहले g का डेरिवेटिव लिखा, फिर उसके अंदर जो फंक्शन था उसका डेरिवेटिव लिखा. ओके so how we can just say about the chain rule? So remark, let us write a remark. So the chain rule can be restated as if this is y is equals to g of u. This is the and this u is some function f(x) is here. Okay, so and both are differentiable, and we have this is dy with respect to du, and this is a du with the so it exists, दोनों के दोनों डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं. Then in this case if you want to write the derivative of y with respect to x, so it will be clear. We differentiate this so if there are some other functions like f1 f2 f3 and you want to more and more, then you can just simplify. Okay, तो अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस का कॉम्बिनेशन है तो आप चेन रूल से बारी बारी से आप चेन रूल लगाते चलिए. तो यहाँ पर अगर एक एग्जांपल हम देख लेते हैं. if we have a function like this y is just equal to, suppose that this is your x square plus का 1 का होल ऑफ क्यूब, ये हमारे पास मतलब फंक्शन दिया हुआ है, एंड प्लस 3 की पावर 4, ये है हमारे पास सपोज. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यू कैन जस्ट अगर हम इसको सपोज दैट थोड़ी देर के लिए यू मान लेते हैं, तो लेट अस दिस इज इक्वल्स टू यू, दिस इज यू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल क्यूब प्लस ऑफ 1. ओके, सो नाउ जो y है दिस इज सम फंक्शन ऑफ u, इट मींस u की पावर 4 हो जाएगा. ओके, फर्दर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हमने v मान लिया है, तो नाउ द u विल बी द फंक्शन ऑफ v, दिस इज v क्यूब प्लस 1. ओके, एंड दिस इज v द फंक्शन ऑफ x, and we want this dy of dx, हमको ये चाहिए. तो we differentiate this y with respect to u first, so this will be dy of du. u को with respect to v आप differentiate करिए, and this v को with respect to x differentiate. तो clearly we can say y के respect में, y को u के respect में करेंगे तो this is 4 u की power 3 into u को v के respect में करेंगे तो it will be 3v square because constant is 0. फिर v को x के respect में करेंगे तो you will have 2. Now सबकी वैल्यू फिर से रख देते हैं, तो this 4 u cube is what, this u is what this is, so it will be this is your x square plus 1 whole of cube plus 1 का whole cube, ये हो गया into plus 1 का whole square into 2x. So you can multiply all the constant, 4 3 12 2 24 and the bracket it will be x square plus 1 whole of cube plus 1, this is whole cube into this is your x square plus 1 का whole of square into x. So this is the answer actually. So if you are going to calculate it directly, do not take this all these functions u, v and so on. So अगर आपको directly differentiate करना है तो you this you have y is equals to, and you can just this is your chain rule, you just apply the chain rule, whole of cube and plus 3 का power 4. तो पहले तो आप अपना फार्मूला लगाएंगे, this is 4 x cos n वाला, it will be your x square plus 1 whole of cube plus 3, जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 1 होल ऑफ स्क्वायर, ये हो गया कांस्टेंट का तो 0 हो गया. फिर इस कांस्टेंट इसके अंदर जो फंक्शन था x स्क्वायर उसका डेरिवेटिव लिखेंगे, इट विल बी 2x. तो दिस इज द चेन रूल, है ना. तो फंक्शन के अंदर फंक्शंस हमारे पास हैं और उनको वो कंपोजिट हैं, सारे फंक्शंस आपस में एक नया फंक्शन बना रहे हैं, तो उस नए फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वी कैन जस्ट यूज बाय द चेन रूल, है ना.
ओके, तो these are the some formulas on the differentiation or the derivative of the function, और कुछ फार्मूला है जो कि क्वेश्चन फार्मूला है, प्रोडक्ट फार्मूला ऑफ द फंक्शंस है ना, और लॉगरिथमिक को कैसे यूज करते हैं, और इससे जो आपका कोई भी हमारे पास फंक्शन है, कोई भी फार्मूला है, सपोज हाउ टू ड्राइव द फार्मूला, ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में सीख ली। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेसिक लर्निंग ऑफ डिफरेंशिएशन। बहुत जरूरी था कि हमारे पास ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी कि कैसे हम फंक्शंस के डेरिवेटिव्स को लिखते हैं, कैसे हम कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, कैसे हम चेन रूल को अप्लाई करते हैं। इवन दो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आप में से सभी लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, और दिस वाज द बेसिक फार्मूलाज और बेसिक फंडामेंटल्स। ओके, तो नेक्स्ट हम कुछ रिजल्ट्स के प्रूफ्स लिखेंगे, कुछ थ्योरम्स के प्रूफ्स लिखेंगे, एंड देयर इज इम्पोर्टेंस, नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट for the advanced level of learning. Okay, so keep watching, keep learning mathematics from here. जो भी स्टूडेंट्स हमारे लेक्चर्स पढ़ रहे हैं वो और भी स्टूडेंट्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करा दें, ताकि हम जो भी यहाँ पर कंटेंट मैटेरियल का अपलोड करते हैं वो आप लोगों तक पहुंचता रहे और आप इसका बेनिफिट उठा सकें। आप कमेंट जरूर करें ताकि हमें पता चलता रहे कि आप सीख रहे हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड ऑल द